Good morning, friends. Namaskar, Sat Sri Akal and Adab. This is my 249th video, and this is on the accession policy which the ministry is willing to draft on. So the ministry, via letter number 75701, Relevance of Cantts, Poll Cantts, dated 21st May 2021, forwarded a letter on some modalities or conditions of the accession. Now, what are those modalities? Now, before that, we will understand. So, out of this, the policy was drafted for only 24 cantonments out of the 57 cantonments. It's very funny. Why only for 24 cantonments? Secunderabad, Morar, Babina, Ajmer, Nasirabad, Sagar, Cannanore, Aurangabad, Dehu Road and Deolali, Ramgarh, Almora, Nainital, Dehradun, Clement, Roorkee, Fatehgarh, Shahjahanpur, Mathura, Ranikhet and Lansdowne. Western Command, Amritsar only. Eastern Command, Shillong and Lebong. So in my Western Command, na Firozpur, neither Jalandhar, neither Kasauli, neither Sabatu, Dakshai. Now 2021, what is this letter saying? Now we'll have fun. It's very important. You know, some people have a very highly educated नेता हैं हमारे कंटोनमेंट में बैठे हैं जो अपने आप को लोकल लीडर्स बोलते हैं, और वो बोर्ड मेंबर्स रहे या बोर्ड नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे, चमचागिरी करी पिछले 25-30 सालों से, वो बेसिकली, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, वो एक किस्म से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंटोनमेंट ऑफिस है। उनको अपनी कमीशनें मिलती हैं 10%, 15%। वो बोली बोलते हैं कंटोनमेंट बोर्ड की, स्टाफ की। कोई हाउस टैक्स के लिए हमारे लिए नहीं खड़ा होता, कोई बिल्डिंग के लिए नहीं खड़ा होता सैंक्शन के लिए, कोई हमारे लिए सैनिटेशन के लिए नहीं खड़ा होता, कोई हमारी म्यूटेशन या सेल के लिए नहीं खड़ा होता। सब हमें कानून समझा देते हैं, होगा, करेंगे, पर जो वही काम अगर उनके नेताओं का होना है। हमारे अम्बाला में थे एक नॉमिनेटेड मेंबर, शैलजा मैडम के टाइम में, आई रिमेंबर, वो मेरे को रोज़ 2011-12 में मिलते थे। क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं। वो मेरे को बेवकूफ़ समझते थे। वो मैडम को अंदर, शैलजा मैम को जाके बोलते थे कि रोनी जी बेवकूफ़ है, चलो फॉरगेट अबाउट दैट। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई ओनली 24 cantonments? इज दिस पॉलिसी बीइंग ड्राफ्टेड बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स अ डिवाइड इन अस, कि बंगलो एरिया और सिविल एरिया दो में फट जाएं हम? वी शुड नॉट रिमेन यूनाइटेड। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को, चाहे हम इधर हों चाहे हम उधर हों, कानून हमारे पे सेम लगते हैं। चाहे इधर सीओ हमें संभालता है, इधर डीओ हमें संभालता है, ओल्ड ग्रांट दोनों जगह बोला जाता है, जीजो 179 दोनों जगह लगा जाता है। पर सिविल एरिया वाले अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और बंगलो एरिया वाले अपने तो आपको, उनकी तो कोई हद ही नहीं है अक्लमंदी की और पैसे की। दे थिंक दे आर रिच, दे आर द most flamboyant people living on earth, without realizing that people like Pesci and Klesha lost from Pune. Latest judgment 2016-15. So please yaar, some people when they start teaching and start admitting into those fancies na, I get irritated. अब सिविल एरिया क्या एक्साइज हो रहा है, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि भी गवर्नमेंट क्या एक्साइज कर रही है। गैस वर्क है, क्या है? वो कहते हैं जी, क्योंकि हमारी जो इनिशियल मीटिंग, जो प्रपोजल ड्राफ्ट होते समय बन रही थी, तो वो क्या बनी? आर्मी ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर एक्सेशन पे स्टेट करी कि भाई सिविल एरिया एक्साइज कर दो। कैंट्स वर अर्लियर फॉर क्वार्टर्स, ठीक है, ट्रूप्स के ब्रिटिश टाइम में। अब वो रेलेवेंस हट गया है उनका। आर्मी को सिविल एरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉजिस्टिकली वो एरिया एक किस्म से रिडंडेंट हो गया फॉर दी आर्मीज पेटी सर्विसेज। अब उन चीज़ों को पिछले 75 साल से हम गवर्न कर रहे हैं, तो वो पर्पसली दे आर सेइंग कि इट साउंड्स लाइक अ कॉलोनियल माइंडसेट। तुम्हें पहले नहीं समझ आ रहा था
जब जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में प्रपोजल रखी थी लेट्स अबॉलिश द ब्रिटिश आर्मी सिस्टम एंड द कंटोनमेंट्स, ना तब नहीं समझ आ रही थी कॉलोनियल। अब आइए 75 साल के बाद फौज को, हर आदमी अपने मतलब से खेल रहा है और हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है। अब वो कहते हैं जी हमारे को म्युनिसिपल सर्विसेज चाहिए और वो स्टेट अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से दे पाएगी बनस्पत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसीलिए सिविल एरिया को आप नेबरिंग म्यूनिसपैलिटी से मर्ज कर दो। अब तीसरा कारण वो क्या देते हैं जो लास्ट में दे दें और जो बेसिकली है सबसे पहले का, दिस इज द कोर इशू, कि भी जो हम सिविल एरिया पे स्पेंडिंग ऑफ डिफेंस फंड्स करते हैं वो नहीं करना हमने, एंड लेट दैट स्टेट गवर्नमेंट डू। सो हम अपने पे ये बोझ, why do we strain ourselves with this revenue deficit of spending money on civilians in the cantonments? सोचो तुम्हारी क्या plight है भाई। This is the main reason for excision. Some residents and local leaders are of the opinion that they have achieved or have convinced the Department of Ministry or the Raksha Mantri. Bullshit. मुंगेरी लाल के सपनों में जीते रहो लीडर्स तुम लोग। ये बेसिकली किसी ने नहीं कोई अचीवमेंट करी वहाँ बैठ के। डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं अपने लालच दिख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सिंपली ये दिख रहा है कि भाई ये बड़ी एक सिंपल डील है, हम अपनी लायबिलिटी उतार देते हैं और जो बैलेंस बचेगा उसको हम प्योर मिलिट्री स्टेशन बना देंगे। तो भैया तुम नेताओं ने कोई अचीव नहीं करी कोई चीज़, कोई लोकल लीडर बोल रहा हो ना ये बात, तो सपनों में मत जियो। जब पारेकर सर ने सारी कंटोनमेंट्स के अंदर 2016 में टूर करा था ना, सो दी एजेंडा इज व्हाट वाज स्पोकन आई नो। जब वो कसौली थे क्या बोल के गए कसौली के या सबाटू के या जलंधर के लोग, आई नो। वो अपनी दिखते ही बोलते रहे बोर्ड मेंबर, उनको अपनी कमाई चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अपना चाहिए, हमारी ट्रांसफ़र ना हो जाए। कोई कंटोनमेंट बोर्ड का बिल्डिंग इंस्पेक्टर ट्रांसफ़र लेना चाहता है, चलो कसौली के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सिकंदराबाद ट्रांसफ़र कर देते हैं, अंबाला वाले को मऊ कर देते हैं, मऊ वाले को कसौली ले आते हैं। होगा ऐसा? 1864 के अंदर कंटोनमेंट एक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया था। उन दिनों में कोई स्टेट्स नहीं थी कि दीज आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हरियाणा का एम्प्लॉय क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लगेगा जाके? नहीं लगेगा। तो ये तो जाना नहीं चाहते यहां से, क्योंकि बैठे हैं, राजा हैं उस जगह के, अनडिक्लेयर्ड। तो प्लीज ये जो सपने और सुहाग दिखाते हैं ना नेता, आई गेट वेरी इरिटेटेड। तो अब जो बैलेंस मिलिट्री स्टेशन कन्वर्ट होगा उसमें ना तो कोई B3 लैंड रहेगी ना कुछ, ऑल विल बी नाउ। इस प्रपोजल में 2021 की एक बड़ी अच्छी बात हुई कि द डिपार्टमेंट वांटेड टू डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय सिविल एरिया। एक सिविल एरिया जो लोग बोलते हैं जो 1937 के रूल 2 के हिसाब से है, नोटिफाइड है बकायदा। The central government may through any official gazette declare an area in cantonment which is inhabited largely by civil population to be a civil area as per the provisions of section 46 of the Cant. The President Cant Board must therefore be concerned with the notification and identify within the cantonment the civil area and what assets class C lands in that area can be offered to the state government. Similarly, civil pockets in bungalow area outside civil area CLA rules 1927 which can be easily merged with the neighboring municipality also need to be identified. This is explained in the same what in section 46 is stating that to declare civil area in any given cantonment. Ask your नेता, वो जो लोकल लीडर है ना आपका बोर्ड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर,
पूछो आपने 2006 के या 1924 के, या सेक्शन तो पहले भी था 46, क्या आपने आज तक कोई सिविल एरिया बनवाया, नया कोई रूल, कोई अमेंडमेंट कराई? नहीं, पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं ना। पढ़ेंगे तो कराएंगे ना कुछ। अब डीओ ने या सीओ ने 2006 में कंटोनमेंट एक्ट आ गया, आज 18 साल हो गए, क्या सेक्शन 233 में लैंड यूज प्लान बनाया अपनी कंटोनमेंट का? बताओ कितने बोर्ड मेंबर, क्या कितनी बोर्ड प्रोसीडिंग्स हैं? आई टेक आरटीआई फ्रॉम ऑल दी 57 कंटोनमेंट। अरे डिपार्टमेंट ने कोई 233 के अंदर लैंड यूज प्लान ही नहीं बनाया, किसी सीओ ने अपग्रेड नहीं करा, लैंड ऑडिट तो ये करते नहीं जो इनके कानून में लिखा हुआ है, ये लैंड प्लान बना देंगे तुम्हारा। सो प्लीज अपने लोकल एमएलए एमपी को झंझोड़ो, उससे सवाल पूछो, उसको बोलो कि सवाल पूछे सीओ से, भैया 233 में आपने कोई लैंड यूज प्लान बनाया? दिक्कत वही है, हमें कानून पता नहीं है। जो हमारे बोर्ड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठे हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक कॉफर्स और चमचास बना रखे हैं, किसी से वो पढ़ना नहीं चाहते, ईगोज इतनी ज़्यादा हैं उनके, अहम। सो प्लीज़ सेक्शन 46 की ये रिपोर्ट ढूंढो, यू नो। अब जो बंगलो एरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर्स एंड रेजिडेंट्स अपनी एक लोकल चैप्टर बनाओ, उसको एजुकेट करो, मेरी वीडियोस देखो, मेरे से फ़ोन पे बात करो प्लीज़। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। अपने लास्ट 3 साल से आपने देखा इस गवर्नमेंट ने कोई इलेक्शन या बोर्ड मेंबर्स ही नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्या ये भी हमारा हाल वही J&K वाला करेंगे? नो इलेक्शंस एंड फाइनली एक दिन नोटिफाई करेंगे, आर्टिकल 370 हट गया, आप कह देंगे जी कंटोनमेंट एक्साइज्ड एरिया चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जो रह गए वो मिलिट्री स्टेशन। ये क्या बात बनी? दिस इज नो सोल्यूशन, दिस इज नो हैपनिंग, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप। हमें तो कहीं कंसिडर ही नहीं करा जाता, किसी पॉलिसी मेकिंग में कोई क्वेश्चनर नहीं आता। सो प्लीज ये पूछो सब लोग, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस लोकल अपने निकालो 233 में, 46 के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट हुई? अभी आधे से ज़्यादा जो हमारे लीडर हैं या वो जो नई एसोसिएशन बनी, हम भी गए, साउथ ब्लॉक पहुंच जाते थे, शायद मैंने तो कभी फ़ोटो नहीं ली साउथ ब्लॉक के अंदर, अनफॉर्चुनेटली एक ही ली थी जो 2012 में जब हम पल्लम राजू, डिफेंस मिनिस्टर, कोरे साहब और शैलजा मैम और हम सारे कुछ मेंबर्स गए थे, तब एक शायद फ़ोटो ली गई थी, अदरवाइज तो हमने कभी ली नहीं। मैं उसके बाद तो बहुत बार गया हूँ, एंथनी सर से मिलने, पारेकर सर से मिलने, रक्षा MOS रक्षा मंत्री राव इंदर सिंह से मिलने, बट मुझे लगा 2011, 12, 16 कुछ नहीं बदला भाई, सब एक जैसे हैं। जैसे ही साउथ ब्लॉक पहुंचते हैं उनका दिमाग एक ही तरफ चलता है, तो उससे पहले वो ज़रूर हमें इलेक्शन लड़ने के लिए। बड़ी खुशी की बात होती है, आई एम वेरी हैप्पी, वन कंटोनमेंट सागर हैज़ मैनेज टू रोप इन देयर लोकल MLA एंड MP, और उन्होंने DC को इन्फ्लक्स करा कि वो DG को प्रेशर करे, DG को अंडर 233, 46 न्यू सिविल एरिया बनाने के लिए नोटिफाई करे, और तभी एक्सिशन की प्रपोजल फॉरवर्ड चले। आप भी कर सकते हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल अप इन सागर। कॉल मी, मेरे को सिर्फ फ़ोन पे बात करो। अम्बाला एक्साइज हो गया, मैंने इतनी वीडियोस बनाई, क्या उसके हालात हैं। अभी लकली सिविल एरिया को इन्होंने कहा बंगलो एरिया भी जुड़ेगा, तो जोड़ो बंगलो एरिया को भी ना। अब ये सोच के कि मेरा नहीं जा रहा तो उसका भी ना जाए, मत करो ऐसे। जितने सिविल एरिया के पैरेलल विसिनिटी में आते हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन से दूर हैं, उन सबको भेजो सिविल एरिया। 5th कंडीशन, एक्सेशन ऑफ सिविल एरिया और डीनोटिफिकेशन ऑफ कैंट। व्हाट गेट्स ना, यहां पे एक नई चीज आई है डावे रिपोर्ट से हटके। एम इज टू डीनोटिफाई अ कैंट, दैट मीन्स अबॉलिश।
appreciable and convert it, balance जो बता, into a pure military station. This is wrong. So जो लोग बंगलो एरिया या लीज होल्ड प्रॉपर्टीज इधर की तरफ रह जाएंगी पुरानी कंटोनमेंट में, वो मिलिट्री, उनके ऊपर कानून अब मिलिट्री के लगेंगे, होंगे वो सिविलियंस, तो सिविल लॉज हट जाएंगे कंटोनमेंट के, कंटोनमेंट एक्ट नहीं लगेगा क्या? अभी देखना आगे क्या बोल रही है गवर्नमेंट पॉलिसी. सो अदर पॉकेट्स वे सिविल आर स्टेइंग इन इट्स मोडालिटीज. वो कहते हैं कि जी जब तक वो रह रहे हैं, जब तक तो हम वो सिविल एक्ट्स लगने देंगे, रेस्ट हम ग्रेजुअली उसको मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो मेरे हिसाब से तो बंगलो एरिया को जाग जाना चाहिए. और जो लोग बिल्कुल ही स्टेशन हेडक्वार्टर, आर्मी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री हॉस्पिटल या वाइटल आर्मी इंस्टॉलेशन के बगल में है बंगलोर, जैसे अम्बाला के अंदर 44 है, कुछ और हैं, अंदर बिल्कुल कोर हेडक्वार्टर के साथ बंगले हैं, उन लोगों को तो वॉलंटरी रिज्यूम करा लेना चाहिए और अपना 500 गज का प्लॉट लेके उसकी एक पॉलिसी 500 से 1000 गज पे जानी चाहिए, जो ओरिजिनली 1970 में थी और 57 में थी, कि भैया आप फैमिलीज बढ़ गई हैं, आप 1000 गज का प्लॉट दो, 500 का मत दो. तो ये भी एक पैरेलल काम होना है. तो बंगलो ओनर्स को जागना पड़ेगा, लोकल चैप्टर्स बनाने पड़ेंगे और आप लोगों को मेरे से बात करनी पड़ेगी. सो बैलेंस बंगलो ओनर्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अजम्पशंस जब ये मिलिट्री स्टेशंस बनेंगे. अब सब क्लॉज बी क्या बोलता है? क्लास सी लैंड्स, प्रॉपर्टीज, कैंट बिल्डिंग्स, म्यूनिसिपल सर्विसेज को तब ट्रांसफ़र होंगी जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, कोई और बिल्डिंग्स हैं. वी आर विलिंग टू ट्रांसफ़र देम टू दी स्टेट म्यूनिसिपैलिटी. वेरी गुड. सो इस चीज़ों को देखते हुए हम इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं. बट अगर हम इन चीज़ों को बात ही नहीं करेंगे, एजुकेट ही नहीं करेंगे अपने आप को, तो नहीं ले जा पाएंगे. सो व्हाट इज़ to be transferred? This is what the government is saying, that we can transfer schools, hospitals and everything. As per statutory provisions, every property or land in the cantonment has to have some sort of municipal coverage, an authority which is responsible for providing municipal services. This would also include aspects like approval of building plans, promulgations of building bylaws, etc. Military area so do not require such approvals. Now just imagine, they say the land which will be left in the military station does not need all these. So definitely under section 10 of the Cantonment Act 2006 provides that the Cantonment Board be deemed to be a municipality. Yes, under the article 243p it is very clear, clause E says. But are we being shifted from central pool to the central pool? That's the question. Thus, after excising the civil area or other civil pockets of Cant, if any land or any area which is required by the military area is left such that no civilian property should remain, including private B3 or leases, that particularly cannot be denotified. So, the system is trying to say, what this letter is trying to say, that please excise the entire area, don't leave any part anywhere. So quite happy about all this. You know, we have to understand what the and how the government is working. So it is clearly stating that no civil population should remain in the military station. Civil population here would mean civil asset, like let's say if I am holding a bungalow or an outhouse or a leasehold property, whether in bazaar, whether in bungalow area, it should be delimited or excised. Now question 6. Now this he says issue pertaining to B3 land. This is the bungalow area now. Mostly people are under the impression that in the civil bazaar there is no B3 land. Entire land in cantonments in the hand of civil population is defined B3 minus B4, which is land which was meant for some surplus uses as a public, and they are generally given to gaushalas and I don't know what all. So now in the case of B3 properties in the area termed outside civil area or bungalow area,
like the old Grand Bungalows, cantonment code leases under the codes and CLA rule leases, such that the bungalows on resumable and non-resumable tenures or schools, etc., which are not recommended for accession and recommended to be resumed or repossessed over a period for military requirements. It may not be advisable to hand over these prime properties to the state government. I understand, guys. Some people were fancying me out. Rani ji, we've been talking, we are wanting bungalow areas to also go into the excise. I'll be reading in one of my videos what has happened in the Defence Secretary's meeting in 2024. But I'm just talking what the government was presuming in 21 when these kind of letters were being made for the first time in accession, for accession, after the CLA rules were being drafted. So even if the transfer to municipality is covering the entire local area, it will result no defense or military construction on the development of these properties and may have security implications. So he says there could be a security threat. So these bungalows, leasehold properties, B3 will not be transferred and they will be gradually resumed. So the policy of resumption stands in 2021. B. Absence of municipal coverage, control of Cant buildings under the provisions of the Cant Act over such properties which are deep inside the military area, adjacent to sensitive military establishment, will result in uncontrolled and unmanageable development. And these properties, such unhindered growth, development within the military station will result in security challenges. So they are very clear. 2021, you do not need to go these. So this correctness and integrity of the military area has to be maintained. In such cases, there may be a case to retain the cantonment building, which would function as the Cantonment Act statutory. So to provide requestee municipal umbrella to these properties, size, type. So the cantonment board's abolishment will be retained till entire resumption of these properties within the new military station is not done. So the headquarter commands, PCBs during the decision making will propose the modalities on a case-to-case basis and then randomly resumptions will be taken. So directions have been given, start resuming. So what is to be retained, what is not to be retained, clause 7 speaks, vacant sea lands now it says, which are apparent to excess land held by Cant board in the form of hospital schools, if contiguous to military area and is required by the station headquarter for military purpose, then the retention may be taken. Similarly, Cant board office, A1 lands, all this will remain in the military station area. The staff of the Cant board will be retained till the entire cantonment or the area military station does not get out of bounds for the civil population. So these proposed modalities, most of the liabilities of the cantonment board staff serving so and so will be retained. So what is the government actually trying? So it will have a conservancy agreement with these balanced staff that your retainmentship will be till the last bungalow is or B3 land is resumed. So they were priced some technical languages of the department that how this entire proposal of retaining of the employees will be there. So Cant board military conservancy persons will be required to be posted in the neighboring Cants. Buildings, utilization, station headquarters, these piers will not be physically movable or relocated, and station headquarters will be required to conclude the MCA with the concern, that's the master cantonment plan, where these
peers have been posted, employing them till they retire or fade away. It's good enough. Where the requirement is there, the minute they retire, they fade away. They do not retire and the military station stands up. So the contractuality of these employees of the Cant board will diminish. So the methodology is being written here, and a mentioning of sole cantonment denotification has been said. How the staff was to be retained. It's an example, everybody can understand that. Now reclassification of lands. The case Cant is denotified. In case a Cant gets denotified, there will be no reclassification of land such that A2, B4 to A1. These land classification pertains to defence lands inside Cant only. Thus, post denotification, entire land would become analogously A1 or AA2 or 1. However, the management of A2 and B4 land remains with the DEO like it is right now also. So the government has drafted everything in place, how things will move. Similarly, there will be no reclassification of B3 land, wherein the land will continue to remain on grant or lease to the HOR, leases till it is resumed or determined. So very clear what the Quartermaster General in 2000 said. Once the military station after this accession is left, bungalow owners, be prepared to be resumed in the coming next 10 or 15 years. 10th, assurance provided by Ministry of Defence. Modalities of the accessions were being formalized by this letter in 2020. So the applicability of NOC guidelines on that date is very important. What is these NOC guidelines? How a military establishment and the excised area is going to be functioning. So the restoration of the NOC guidelines will not be imposed in the excised area. But I just told you about Ambala. Even today the Ambala Southern Municipality or the excised area NAC is asking for an admission deed. Here it is saying it is not required. No NOC is required for sale, purchase or mutation or anything. The LMA has to consider about the bungalows which are left in the military station. Access to the excised area, all civil area would be continually approachable through all the roads which lead to it. And the President Cantonment Board right now, or the headquarter command, will make sure about it. The PCB, that's the President Cant Board, and the Deputy Collector of the district will make available to the state and to the Ministry of Defence all physical managements of these roads. Concerned COs, DOs, PD, DS are present. However, in some cases, PCBs are not available. Brief will be sent to the Army headquarters, and then the management decision by the MOD would be taken. So accession cannot take place till the Ministry of Defence or the Army headquarters does not approve it. We've had 10 notifications, I know. Army stance now on the proposed accession and denotification of Cantts has been reiterated in para 3. The President Cant Board must be apprised of the same, and contrary position being taken during the decisions of the committee must be informed. Committee reports have to be submitted within 30 days of the constitution of the committee to the President Cant Board. So the PMO and the MOD office in connivance has been putting a timeline towards this accession, but one has to understand that it is the MOD which has drafted the proposed guidelines. Nowhere the state collector or the state department or the urban development department of the state has been brought in, and there has been a consensus on these guidelines. It's something like we are pushing. The army is pushing the entire residents of civil area to the wall, and they're saying, please, we are throwing you out of the cantonment because we can't take your financial burdens of providing you with basic amenities. So friends, please understand,
even after accession, the Ministry of Defence is not willing to leave many of the rights onto them. They are not transferring the title of the land. They are not leaving you the bylaws of the building. They are not leaving security reasons on your property. They are saying for resumption, if it has to be, it has to be done, even if excised in civil area. What does this mean? So all these proposals were being done, and it must be proved that this issue is being monitored by the PMO office. What is the PMO office to do with Ministry of Defence or with the accession of the civil area? You have to understand this government is working on a dictatorial mindset. One man sitting on the top would pass a mindset, okay, from 8 o'clock, notebandi or demonetize. So like this, 21, he goes with a deal with Vipin Rawat and he says, I need your surplus lands, you take my civil area, let's have a barter system, throw out the civilians from the cantonment, leave it, we'll make the rest as military station. The Prime Minister is looking for the surplus land, about 3.5 lakh acres of land outside these cantonments, which he's already done. He's picked up Kanpur, Ayodhya, everywhere, Faizabad, which is. So please friends, try and understand. Watch these videos. These are very important videos on accession policies. This is the policy drafted by the ministry and guidelines have been sent down the spine. DOCOs have to adhere to these kind of guidelines. And we don't know about these guidelines. Why? Because we live in peace. We are so lazy, we don't even want to pick up and get to know our neighbor. We don't even want to share it with anybody that today I have received a notice. We are so scared. We don't trust each other. Please wake up. We are old grants, never converted into new grants because we were revenue free grants. Thank you. Good day.